Hello students, good morning everyone. Students, here today in this video I am going to summarize chapter 8, life in tropical and subtropical regions in geography. Okay, and you already have understood this chapter clearly, where I have given you some explanation clips. So now let us recall the topics which we have covered under this chapter. So first of all, student, life in tropical and the subtropical regions. So do you know which are the tropical and the subtropical regions? So here in this figure you could clearly see that this tropical and the subtropical region is that which is between the equator and the topic of कैप्रिकॉन एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द टॉपिकल रीजन्स. ओके, एंड द रीजन बिटवीन द topic of cancer to arctic circle, that is the subtropical region. Okay, so both regions have डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, दोनों ही जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो अलग होती हैं एंड इट इन्फ्लुएंस टोटली द life of the people inhabited there. Okay, and in the tropical region, in the tropical region between the topic of cancer and topic of capricorn, the life is very uncomfortable just because it's very humid and here the outbreaks of the deadly disease वेरी कॉमन. ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही स्लो डाउन है एंड रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होती रहती है. सो इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल स्टिकी एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ नियर टुवर्ड्स द इक्वेटर. ठीक है, ये इक्वेटर के पास का रीजन है, तो यहाँ पर जो टॉरिड जोन होती है, टॉरिड हीट जोन होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस it's very uncomfortable there. Okay, and whether the subtropical region from the topic of cancer to arctic and the topic of capricorn to antarctic circle, this is the subtropical region and just because it lies beyond the 40-degree latitudes. ठीक है, in both hemispheres, in the north and the south hemisphere, so it has the distinct summer and winter seasons and it has abundant rainfall. so यहाँ पर क्या है, flat stretches मिलते हैं land के which has a so fertile soil. तो ये region जो होता है commonly economically developed होता है and it is densely populated. So students, in brief of the topic on subtropical region, we'll take the example of the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra region. Amazon basin, which is the region of the tropical, which is the example of tropical region, and the Ganga Brahmaputra region, which is the example of subtropical region. Okay, so first of all, let us understand about the Amazon basin, its location and its basic informations, means the climatic conditions, the landforms, the vegetation, wildlife and the life of the people there in the Amazon basin. So first of all, Amazon basin, it occupies the large portion of the subtropical South America. ठीक है, ये आपको दिख रहा है, this is North America and this is South America. ठीक है, तो Amazon basin, it's a part of the South America and especially towards the northern and western part of the Brazil. ठीक है, ब्राज़ील का northern और western part hai. Okay, so let us see the landforms there in the Amazon basin. And Amazon basin, it is bounded by the Guiana Highlands. ये आपको दिख रहा है Guiana Highlands towards the north and while Brazilian Highlands towards the साउथ. ये आपको दिख रहा है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है जो कि साउथ में, जो कि बाउंड किए हुए हैं अमेजोन बेसिन को. ओके, एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ covered by the Andes mountain ranges. यहाँ पर क्या Andes mountain ranges हैं towards the south of the basin. And Amazon is the world's second largest river, second longest river. Okay, and it covers the almost 6400 kilometer from the Amazon to the Atlantic ओशन. ठीक है, ये एंडीज माउंटेन से अमेजोन रिवर जो है निकलती है एंड इट फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन. ठीक है, तो
it's very important, you must know about it. And Amazon river, it accounts almost 20% of the total water carried towards the ocean by the rivers. ठीक है, जो भी रिवर वाटर लेकर कैरी करती है ओशन में, उसका 20% वाटर स्पेशली अमेजोन carry करती है. Okay, next is the climatic conditions. So the climatic conditions in the Amazon basin, it's very warm and rainy climatic conditions. Nights are more cooler than the days. ठीक है, दिन में बहुत गर्मी होती है बट नाइट्स होती हैं वो ठीक होती हैं, बट इट्स डू नॉट हैव टेम्परेचर वेरी फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ पर क्या, जस्ट बिकॉज इट इज़ टुवर्ड्स द इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर ये पास आउट होता है यहाँ से, और ये टॉपिक ऑफ कैंसर है और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ज़्यादा वेरी नहीं करती हैं. सो इट्स वेरी ह्यूमिड, वेरी स्टिकी वेदर विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया स्पेशली. ओके, एंड Amazon basin, it has a dense forest and it has produced a huge amount of water, means there is a heavy rainfall throughout the year. And it receives the 350 centimeter rainfall annually in the Amazon basin. Okay, next is the vegetation. So vegetation in the Amazon basin is commonly, it has a tropical rainforest. ठीक है, यहाँ पर कौन सी वेजिटेशन होती है, टॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, इट्स स्पेशली फाउंड टुवर्ड्स द इक्वेटर, मीन्स बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर टू टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड इन दिस फॉरेस्ट इट हैज़ रबर, palm, hardwoods especially, and mosses, shade tolerant, and the woody vines it has, which is called the lianas. ठीक है, यहाँ पे लियानास नाम की एक वुडी वाइन होती है, जो कि जो भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी ट्रंक्स पर फैली हुई होती है. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. सो वाइल्ड लाइफ इन द अमेजोन बेसिन is very vary. It has the tree dwelling sloths and various types of monkeys and many species of bats, जैसे वम्पायर है एंड ब्लड ड्रिंकिंग वम्पायर. तो ये सब क्या है, ये एक टाइप के बैट होते हैं जो स्पेशली अमेजोन बेसिन में पाए. इट ऑल्सो हैव लार्ज कैट्स, जगुआर्स एंड colorful hummingbirds, parrots, especially found there. Okay, and many types of insect like spider, scorpions, flies, mosquitoes, ants, crocodile also found there. Okay, next is minerals. So South America, where's the Amazon basin, it has a rich mineral region, which is the Serra dos Carajás. ठीक है, here you are seeing Serra dos Carajás. It's a region which is rich in minerals. Okay, and the South America especially has petroleum, gold, manganese, iron, tin and copper. So here you could see the regions which has the particular type of mineral they are in the South America. Okay, next is life of the people. So students, here you must know about it that the Amazon basin, it has the it don't have a flat terrain mostly, and it don't have the fertile soil. So the life of the people is very uncomfortable. So, and because of there is a dense forest cover, so there is a poor transportation facilities, and there is a frequent outbreaks of disease like malaria and yellow fever. तो यहाँ पर कोई किसी भी टाइप की जो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो पॉसिबल नहीं है. एंड यू नो देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड नेटिव इंडियंस ऑल्सो लिव देयर, एंड द यूरोपियन एंड द मेस्टिजोस द पीपल मिक्स ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन इंडियंस. ठीक है, जो ट्राइब है हम यूरोपियन और अमेरिकन इंडियन, उनको मेस्टिजोस कहा जाता है, जो कि अमेजोन बेसिन में सर्वाइव करते हैं. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक द पीपल सिंपली जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ नो फर्टाइल सॉइल, तो यहाँ पर मेनली लोग जो हैं थोड़ा बहुत शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं. एंड इसके अलावा माइनिंग, जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ रिच रीजन्स विच आर रिच इन मिनरल्स. ठीक है, तो यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, but sometimes people also try to practice different type of activities. Okay, next is the transport in cities. So students, just because it has a very uncomfortable and sticky region, so there is a poor transportation facilities, and it's very difficult to construct roads and railways in the Amazon basin.
Okay, just because it has a dense cover of the vegetation and damp and swampy ground, so it's not so easy to build the transport facilities there. And there is a trans-Amazonian highway which is now runs from the Atlantic port to the Pacific border of the Peru. It's an important highway which is there in the Amazon basin. Okay, and Belém, it's an important port in the Brazil. Manas, it's also a port in the river Negro. So students, this is all about the Amazon basin and remaining portion like the Ganga and Brahmaputra basin. This I would love to explain in our next video. Till you all must have to read the chapter, do the given work, and ask if there is any doubt. Okay, anything which you didn't understood, then you may ask it. It's just an summary video, so I hope you all have recalled the topics under the Amazon basin. Okay.